Welcome you all. In our early lecture, we discussed about the electrostatic force of repulsion and attraction between two charges. Rather, we discussed the Coulomb's law. And today we will be going ahead with few more questions. Before that, we will be discussing some limitations of Coulomb's law. It's not a universal law. You must put down this line that it's not a universal law. Coulomb's law is not a universal law. It's not universal law. Second, it is valid for point charges. For 2 point charges, ये valid से point charges के लिए. And third limitation can be there. Distance is less than 10 raised power minus 15 meter. It loses its validity. Distance is less than 10 raised power minus 15 meter. Coulomb's law loses its validity. And fourth, it is a medium dependent law. Dependent. There are more limitations of Ohm's law, Coulomb's law that you can see through different books. Now, today we will go further. We will be discussing on this comparison. Say, suppose we discuss a numerical in our previous lecture. That is a proton in a hydrogen atom and its electron, and they are separated by some distance r. And r was equal to 0.53 angstrom. How we compare that electrostatic force with the gravitational force? Inside the nucleus there is proton and the electron revolving around the nucleus. So the electrostatic force that we calculated, that's Fe is equal to K charge of proton and charge of electron divided by distance r square. And similarly, the gravitational force will be equal to G mass of proton, this is mass of proton, and here we take the mass of electron into mass of electron divided by r square. Since distance is same, this r square will be cancelled. So when we take the ratio, that Fe divided by Fg, it will come out to be K E square divided by G MP to ME. So that comes out to be equal to 2.4 into 10 raised to power 39. So that indicates F electrostatics is 10 raised power 39 stronger than gravitational force between the electron proton and between the electron proton. So electrostatic force is approximately 10 raised power 39 times greater than the gravitational force between the two masses, that is at atomic level. We are considering here proton and electron. So after this ratio, it shows that gravitational force at atomic level is negligible. So gravitational force कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसको एटॉमिक लेवल पे नेग्लिजिबल करते हैं, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्सेस है, सॉरी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. और अगर हम एक न्यूक्लियस ले लेंगे जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन हो, तो ऑब्वियसली यहाँ प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो वो भी रिपल्शन होगा. तो ऑब्वियसली रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन अंदर एक शॉर्ट रेंज फोर्स है. इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स that is much greater than the electrostatic force of repulsion, and electrostatic force of repulsion is much greater than the gravitational forces. Both the nuclear force is very much stronger than the electrostatic force, and electrostatic force is very much stronger than the gravitational force. तो जो nuclear force है वो short range force है inside the nucleus, और जो इस प्रोटॉन प्रोटॉन सेपरेशन को होने नहीं देता है, because of that nuclear strong nuclear force, वहां पे नेग्लिजिबल बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सामने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने नेग्लिजिबल बन जाता है. सो दिस इज द केस दैट्स वी आर कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो नाउ लेट अस डिस्कस. आगे चलते हैं. तो
In our when we put down this Coulomb's law in a vector form, say suppose this was charge 1 at position vector r1, and this was charge 2 at position vector r2. This was the force, direction of force r12 cap, and this was here r, that come out to be later r2 minus r1. It is a unit vector, the direction of the force, and force is this is here q2, O, say suppose AB, and force charge q1 produces force on charge 2. So I have already discussed it. F21 means force on charge 2 q2 divided by force on charge 2 due to charge q1. We have already discussed it, and this is the diagram. This is the force F21, force experienced by the charge 2 due to charge 1. This was a vectorial representation of Coulomb's law with respect to some frame of reference having position vectors of two charges separated by distance r. Then we calculate on using the vector law r2 minus r1. So we got the relation here. The relation we got that F is equal to q over 4 pi epsilon naught r square into q2, that's q1. This r square, or I can write in vector form. I can write in vector form F is equal to q1 divided by 4 pi epsilon naught. And I can write here r12, it's a unit vector, divided by r square, say suppose it's q2 here. R square, let's move on. You can write like this. This vector form is a unit vector, or I can write it like F is equal to q1 over 4 pi epsilon naught r12 vector, then will come out to be r cube into q2. When I write the r vector, then I have to put down the cube. When I write the r unit vector, then it's r square. Now this is the vector form, vectorial representation of Coulomb's law. And this portion, now let me deduce some expressions out of this very equation. Let me define this very point as E. Then I can write F is equal to E into Q. This E is the electric field produced by charge Q1 on Q2. Or he can say force experienced by charge Q2 due to charge Q1 is equal to the field times electric field times magnitude of charge 2. So I can simply write F is equal to E into Q2. This E is the electric field. So electric field times Q2, the magnitude of charge, gives me the force, electrostatic force. Or I can write simply this electric field is equal to F divided by Q2. Simply, electric field is the force due to this charge Q1 on the charge Q2. So the Q2 is just experiencing a field due to charge Q1. So electric field is force per unit charge. This can be treated as test charge, and this can be treated as source charge. हम इसको source charge भी लिख सकते हैं, that the source charge Q1 produces electric field and exactly force on test charge Q2. So this is an actual definition of electric field. So this is I deduce it from this very equation. This is the electric field.
So Q1, so you can write simply, so electric field E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 beta R square into R12 unit vector. The direction of electric field, say if this is a charge Q, say I treat this charge Q1, so electric field at this point, जहां पे मैंने Q2 रखा है, इस लोकेशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका दूसरा चार्ज होना जरूरी नहीं है, फोर्स के लिए आपका दूसरा चार्ज होना लाजमी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको सेकंड चार्ज होना जरूरी नहीं है। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्रोड्यूस यू नीड ए सिंगल चार्ज, and to experience that very electric field you need the next charge to be located at some distance r. So you can write this, E is a function of r, or E related to r, or E electric field at a distance r, and at that very distance you are placing another charge, say Q2, or you can say that test charge, जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस या इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर रिलेटेड टू आर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जरूरी नहीं है इसका दूसरा चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स, हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करना है, यू प्लेस समवेयर अनदर चार्ज, दैट अनदर चार्ज नोन एज टेस्ट चार्ज, मीन जिस पे आप देखना चाहते हैं कि इस पे कितना फील्ड पड़ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन दैट वेरी टेस्ट चार्ज, जो मैंने यहां पे Q2 रखा है, या Q0 भी रख सकते हो आप। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 1 over 4 pi epsilon naught Q beta R square R vector, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब पड़ रहा है, दैट यू आर टेकिंग द डिस्टेंस इनटू कंसीडरेशन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे होगी E, इट विल बी रेडियली, हर एक साइड से ये रेडियली मूव कर रहा होगा। You will have an electric field all over the region. वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर एक रीजन से होके जाएगा। So this is now E is equal to 1 over 4 pi epsilon Q divided by R square R12 vectorial form of electric field due to point charge, say Q1. So Q1 is a point charge that produces an electric field on this very point. और मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको दूसरा एक सिंगल चार्ज ही काफी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट आल्सो वैरीज एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जितना आप दूर जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता जाएगा। सो नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे कैसे डिपेंड है? So I got the relation, either F is equal to E into E, or I get the relation F is equal, E is equal to F by Q. Suppose this is a charge, say Q1 is another charge of 1 coulomb, and how much electric field is producing? So you can write F is equal to E into charge on the test charge is 1 coulomb. So F is equal to E. The electric field is actually the force experienced by a unit coulomb of charge. The electric field is actually electrostatic force. Electric field is same as force. When you are जब आप डिस्कस करेंगे the force experienced by a unit coulomb of charge, then we can say that force is equal to electric field E. So for a unit coulomb of charge, you have F is equal to E. So E is equal to F by Q is another way to write the equation. General formula for that field due to point charge, E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square. If Q is a source charge producing the electric field, and that is varying with distance R, and at any point on the surface you can calculate the electric field at different locations. At different points you can calculate the electric field, and electric field is varying inversely to square of distance. The wave force is varying square of distance.
So this electric field, say suppose there's a charge, it producing an electric field on this very point. Maybe this point will go in this direction. इस पे ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन दिस टेस्ट चार्ज सपोज क्यू नॉट, और ये यहां की तरफ मूव करना शुरू करेगा. इट मींस इट विल एक्सेलरेट इट. सो आई कैन राइट F is equal to E into Q. You can accelerate the another charged particle. You can write M into A is equal to E into Q. So A is equal to EQ divided by M. This is the way to write the acceleration of the particle, charged particle, when the particle is under the influence of electric field. जब भी कोई charged particle under the influence of electric field, इसके electric field के influence में आएगा, obviously ये particle accelerate करेगा, and you can calculate the acceleration of that very particle with this formula. Here acceleration is inversely proportional to mass. इसका मतलब है mass of proton is greater than mass of electron. तो obviously acceleration of proton will be less than acceleration of electron. यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आप किसी चार्ज का, एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप यहां प्रोटॉन रखते हो, यहां पे इलेक्ट्रॉन रखते हो. पहले आप इस चार्ज से प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाते हो, फिर इसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पहले प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाते हो, फिर इसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हो. तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को विद डिफरेंट मासेस को ड्रॉप करते हो, वो दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करेंगे, तो वो एक ही एक्सेलरेशन से नीचे नहीं आने वाले हैं. इन केस ऑफ ग्रेविटी, you have a gravitational constant 9.8, sorry, you have acceleration due to gravity g, small g equal to 9.8 meter per second. That is constant for every object. It is mass independent. यहाँ मास का कोई फर्क, कितना भारी भी हो, दूसरा कितना छोटा भी हो, दोनों विद सेम एक्सेलरेशन से गिरेंगे. लेकिन जब आप किसी भी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, वो दोनों की एक्सेलरेशन वहां g की तरह से नहीं होगी, वहां की एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड होगी. जिसका ज्यादा मास होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, जितना मास कम होगा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी. क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम है मास ऑफ प्रोटॉन से, तो इसका मतलब है प्रोटॉन की एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में कम होगी और इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन प्रोटॉन से ज्यादा होगी. सिमिलरली अल्फा पार्टिकल पे भी ये अप्लाई हो जाता है. ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट भी होता है, और हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया. और हमने ये भी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरीज एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. लेकिन असल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे, ये किस पे डिपेंड है? असल में ये किस पे डिपेंड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कहा इट वैरीज एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. Electric field varies as square of distance. How? अगर हमारे पास एक चार्ज है, ऑब्वियसली यहां पे भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऑब्जेक्ट को यहां खींच रहा है, यहां पे हर तरफ से ये इन्फ्लुएंस करेगा. चार्ज की एक खासियत होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हर साइड से होगा. जैसे आप एक लैंप जला रहे हो, लैंप हर साइड से रोशनी दे रहा है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, सपोज यहाँ इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस. तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा. ये एरो दिखा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है. ऑब्वियसली ये यहाँ पे भी इस पे असर करेगा, बाहर की तरफ असर करेगा. अगर आप स्ट्रेट लाइन डालेंगे, यहां से ही डालेंगे, तो ऑब्वियसली ऐसे लाइन्स आ जाएंगे. ये इन्फ्लुएंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट कर रहा है, ये
इसकी यहाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होगा। सपोज मेरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस वाले पूरे सर्कल पे या इस वाले जो इसके इर्द गिर्द स्फीयर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, तो यहां पे जो ये लाइंस है जिन्हें हम फील्ड लाइंस कहते हैं, दीज लाइंस यानी कि जो इस चार्ज से बाहर की तरफ पुश करता है किसी ऑब्जेक्ट को, जो मैंने यहां पे एक चार्ज रखा, इस चार्ज टेस्ट, इस सोर्स चार्ज ने इसको इन्फ्लुएंस किया, पुश किया बाहर की तरफ, तो कुछ ना कुछ निकल रहा है, और जो ये लाइंस हम दिखा रहे हैं, इसका फील्ड लाइंस, these are called field line, electric field lines. ये फील्ड लाइंस रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि यहां पे जो मैंने एरिया कंसीडर किया है, इस एरिया में, इस वाले पोर्शन में यही चार फील्ड लाइंस है, और यही चार फील्ड लाइंस यहां इतने वाले एरिया में है। अगर मैं इस पॉइंट को भी देख लूं, इस पॉइंट को, ए को भी देख लूं, बी को भी देख लूं, यहां पे भी चार फील्ड लाइंस है, 2 3 4, यहां पे भी फील्ड लाइंस है, लेकिन यहां जो डेंसिटी फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यहां इतना ही एरिया है, इसमें चार फील्ड लाइंस है, यहां इतना एरिया कवर कर रहा है, यहां इतने एरिया में चार फील्ड लाइंस है, तो डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यहां पे ज्यादा है। तो इसका मतलब है इस वाले पोर्शन में फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी। The electric field strength due to these field lines will be greater on this area much area as compared to this much area. तो field lines per unit area, यहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम है, यहां पे इस इतने एरिया में फील्ड लाइंस 4 पड़ रही है, यहां इतने ही एरिया में 4 लाइंस पड़ रही है फील्ड लाइंस की, तो यहां फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा होगी। जितना मैं बाहर ओवर चला जाऊंगा, आपका एरिया उतना ज्यादा हो जाएगा, और आपका एक 4 फील्ड लाइंस इतने वाले एरिया में पड़ जाएंगे। दिस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। दैट शोज द मोर यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, your electric field varies as square of distance, because r square हमें इसको, अगर हम कह रहे हैं कि ये स्फीयर बना रहा है, तो you can write the E is inversely proportional to 1/4 pi r square, area of sphere। और दूसरी बात, ये जो फील्ड लाइंस है, ये ऐसे होगा स्फीयर, ये फील्ड लाइंस इस एरिया पे, जो ये एरिया है, इस पे परपेंडिकुलर पड़ती है। The field lines are perpendicular to the area। जब नॉर्मली यहां पे ये एरिया ऐसे होगा, यहां पे ये एरिया ऐसे होगा, यहां पे ये एरिया ऐसे होगा, तो यहां पे इतने वाले एरिया में फील्ड लाइन ज्यादा पड़ेंगे एज कंपेयर टू यहां एरिया में उतने 4 ही पड़ रहे हैं, यहां भी 4 पड़ रहे हैं, एरिया कम है, ये एरिया पोर्शन है, यहां पे ये इतना एरिया है, यहां पे इतना सारा एरिया है। The field lines varies with respect to the area। The electric fields, the more you move away from the positive charge, the field lines strength यानी कि density of field lines decreases, because field lines per unit area यहाँ पे decrease हो रहा है, आपका number of lines per unit area decrease हो रहा है, so field intensity will be maximum at this point, then this one। That shows that your electric field intensity or electric field strength varies as square of distance। There's another version of calculating that field lines varies as square of distance। Now I told कि field line जो है, number of field line density, line density हम लिख सकते हैं lines, field lines per unit area, field lines perpendicular on the area divided by total area। line density जो होगी, that will be field lines produced by the charge perpendicular on the area, surface area, and to the
total area. So field lines per this line density, field lines perpendicular on the area डिवाइड बाय टोटल एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सपोज हमारे पास चार्ज Q1 है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज हमारे पास चार्ज है, यहाँ पे सपोज टेस्ट चार्ज Q0 है. पहले मैं देखता हूं कि एक चार्ज कितने फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करता है. अगर मेरे पास एक चार्ज Q है, कितने फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करेगा. सपोज आई टेक इट फॉर 1 कूलम. सपोज 1 कूलम चार्ज कितने फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करता है. लेट 1 कूलम ऑफ चार्ज, सपोज मैं मानता हूं, लेट नहीं करता हूं, 1 कूलम ऑफ चार्ज produces 1 by epsilon times field lines. एक कूलम चार्ज मेरे लिए 1 by epsilon times field lines प्रोड्यूस करता है. 1 by epsilon times नंबर है, जस्ट ए नंबर. इतने फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करता है. मैंने आपको कहा कि चार्ज एक है और ये फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करता है इन ऑल डायरेक्शंस, मेकिंग ए स्फीयर. स्फीयर के हर साइड से, जैसे स्फीयर पे परपेंडिकुलर पड़ता है, जहां पे यहाँ जो बॉल होगी, बॉल के सेंटर में होगी, तो स्फीयर पे परपेंडिकुलर पड़ने वाले हैं. सपोज 1 coulomb of charge produces 1 by epsilon times the field lines. Then Q coulomb of charge produces Q divided by epsilon times field lines, obviously. और मैंने क्या कहा था, फील्ड लाइन्स नंबर डेंसिटी क्या मैंने कहा था, नंबर डेंसिटी फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर टू द एरिया डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया. तो फील्ड लाइन्स 1 coulomb of charge produce 1 by epsilon r times field lines. Then the Q coulomb of charge will produce Q by epsilon r times field lines of charge. Then the number density, then electric field number density, E will be equal to Q by epsilon r times divided by total area surface area 4 pi r square. So E will be again equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by r square. Then again the electric field intensity, how we can calculate the electric field due to a point charge. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दोज नंबर ऑफ लाइन्स, फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइड बाय द टोटल एरिया कितना हमारे पास होगा. द टोटल एरिया विल बी 4 pi r square, दैट्स एरिया ऑफ स्फीयर into field lines is Q by epsilon r times. When you calculate this, you get 1 over 4 pi epsilon r times Q bata r square. This is known as electric field due to a point charge. और सबसे बड़ी बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ही प्रोड्यूस करता है और सेंस भी चार्ज ही करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज एंड लेटर द कैलकुलेशन एट सम वेरी पॉइंट इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय द अनदर चार्ज. वो चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चार्ज को ही इसकी वेसिनिटी में रख के हम उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना प्रोड्यूस किया वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द electric field due to a point charge. So now when I take that in a frame of reference, electric field, say this is positive charge, produce some electric field at some distance r. At this test charge, it produces electric field r. So we can write E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by r square. It's actually 1 over epsilon naught times this over area of sphere. हम ऐसे लिखते हैं बाद में. So you can write it in vector form. E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by r square into r1 2 unit vector. हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज varies as square of distance.
If R tends to infinity, your electric field tends to 0. If R tends to infinity, anything divided by infinity, E tends to 0. So your graph E versus V, E versus R is like this. This is a graphical representation of E and R. So electric field due to point charge, because why did I repeat this electric field due to point charge? There is a scalar distance. If I change this unit vector into vector, E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by R square. Then I can break this vector divided by magnitude. Then E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by R square R cube. This becomes R vector. That doesn't mean that electric field there is a cube of distance. No, you have a R here that can get cancelled here. It's in vector form. When you write the R vector, you have R cube. When you write in above R unit vector, then you have R square. The actual function is this. The electric field varies as square of distance, not as a cube of distance. That's why I repeat it again and again. A graphical representation shows how it varies with R. If R tends to infinity, then your electric field will reach to or tend to 0. So now here I write electric field E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by, say suppose R Q, then I write R vector. So R vector has a 3 components, xi plus yj plus zk, and R magnitude is also equal to under root of x square plus y square plus z square, or x square plus y square plus z square raised to power 1 by 2. Instead of root, I took 1 by 2. Then above equation can be written as E is equal to 1 over 4 pi epsilon times Q into xi plus yj plus zk divided by R cube. R is this, x square plus y square plus z square is 1 by 2, but यहाँ पे cube है, that can be 1 by 3 and 1 by 2, 3 by 2. So E will be equal to E will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q xi. मैं अलग डिवाइड करूँगा, divided by x square plus y square plus z square is power 3 by 2 plus 1 over 4 pi epsilon naught qyj divided by x square plus y square plus z square is power 3 by 2 plus 1 by 2 q yz के साथ आएगा 4 pi epsilon naught qz k cap divided by x square plus y square plus z square raised to power 3 by 2. This is the x component of electric field. So E is equal to EXI plus EYG plus EZT. So the components of electric field in the 3 directions. So this is the, you can have a component of electric field. So if Ex is equal to Ey is Ez, then electric field intensity is spherically symmetric. This is a condition. If all the three, Ex, mod of Ex, Ey, and Z are equal, then you have a spherical symmetric electric field strength, और electric field intensity is spherically symmetric. Spherically symmetric का मतलब हो गया कि आप स्फीयर के अंदर आपका सेंटर चार्ज है, तो हर जगह से ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और करता भी है. जितना आप दूर दूर जाएंगे, इफेक्ट विल बी सेम थ्रू आउट द स्फीयर. सो अब जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज समझेंगे, तो पॉइंट चार्ज सेंटर में है और उसकी इर्द गिर्द स्फीयर है. जितना आप एरिया बढ़ाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे, डिस्टेंस आर उतनी बढ़ेगी, दैट आर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, और उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा. दिस इज द कंपोनेंट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कंपोनेंट सम ऑफ कंपोनेंट वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस, but the electric field is actually at 1 coulomb. It's actually force.
So force is vectorially added, hence electric field is also vectorially added. This was about the electric field. We'll be discussing next topic on dipoles. Thank you very much.